I think it's high time we start using the F word. I mean finances, of course. हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी सैलरी के इंतजार में बीतती है, only to see it vanishing the same week or the next. और फिर हम अगली सैलरी के इंतजार में लग जाते हैं. Well, that doesn't sound like the recipe to become rich. हालांकि कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं है जिसके ऊपर चलकर आप अमीर बन सकते हो, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रास्ते जरूर हैं जिन्हें आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए अगर आपकी मंजिल वेल्थ है. How do we know? Well, people who are already rich never do that. So nor should we. Without any blabber, let's talk about 3 mistakes that riches never make. The first one is spending recklessly. It's not just your income, but also your expenditure that decides how rich you are. For example, suppose 2 बंदे हैं. एक बंदा 10,000 रुपीस कमाता है और 2,000 रुपीस खर्च करता है. वहीं दूसरा बंदा 50,000 रुपीस कमाता है और 48,000 रुपीस खर्च करता है. अब आप बताओ, इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन होगा? ऑब्वियसली वो जो 10,000 रुपीस कमा रहा है. सिंपल मैथ्स है, लेकिन हम में से कई सारे लोग इसे अपनी डेली लाइव्स में अप्लाई ही नहीं करते हैं. Learning how to manage money is as important as it is to learn how to earn money. Have a look at the lifestyles of the wealthiest men in the world. भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता. True, लेकिन वॉरेन बफेट अभी भी उसी मकान में रहते हैं जो उन्होंने 50 साल पहले खरीदा था. Zuckerberg never wears Gucci or Rolex. No one is buying fancy cars to impress the world. It's us who think of the status quo and not the value of the money we're spending. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपना हार्ड अर्न्ड मनी अपनी इच्छाओं पर खर्च नहीं करना चाहिए. Oh, thank God. करो, बिंदास करो, but that should be within your means. And when I say that, remember, if you can't buy something twice without getting broke, you can't afford it. Especially in cases of things which you want but you don't need. Never ever get yourself into EMIs and loans for something that's not a need. अब ये needs और wants को segregate करने के लिए you need to start tracking your money and have a budget. By tracking, I don't mean you have to put a label on every penny you're spending. But take out at least 20 minutes in a week to keep a check on where your money is going. And once we know what we're doing, we can get to the part of improving it. And this improvement comes from having a budget. Use a universal 50-30-20 rule if you're new to budgeting. नहीं समझे? मैं बताता हूँ. अपनी सैलरी का 50% आपको उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी नीड्स हैं. 30% आपको उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो आपकी वांट्स हैं, और 20% आपको सेव करना चाहिए. अगर आपकी इनकम अच्छी है, आप बहुत ज्यादा कमाते हो, तो आप 50% या उससे ज्यादा भी सेव कर सकते हो. Now this may seem a bit much, but trust me, a little discipline goes a long way in making you wealthy. Live on less than what you make until you're financially free. It'll be worth it, I promise. And most importantly, beware of impulsive shopping. Nothing makes you go broke like that does. So whenever you feel like buying something impulsively, add it to your cart and wait for at least 2 weeks to buy it. In most cases, आप उसे भूल चुके होंगे. लेकिन अगर आप नहीं भूले, then that means it's probably important. The second one is not investing wisely. Let's talk about investments. तो अभी ये जो 50-30-20 रूल में 20% सेविंग्स के बारे में मैंने बात की, तो ये सेविंग्स आपको एक्चुअली इन्वेस्ट करनी है, बैंक्स में नहीं रखनी है. गजब बेइज्जती है. You must be wondering why. Because there's a demon called inflation, जो आपके पैसे की वैल्यू को ओवर टाइम डिक्रीज करता रहता है, और बैंक्स इनफ इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड नहीं करते इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए. तो अब आप सोचोगे कि यार इन्वेस्टमेंट्स तो रिस्की होते हैं. बस यही सोच तो है जो लोगों को अपना पैसा ग्रो करने से रोकती है. See, there's a rule of thumb. No risk, no reward. Market risks are always there, but then there's also the opportunity to multiply your capital. None of the rich people you know just earned all their money. उन्होंने कुछ कमाया और फिर उसे सही जगह पर इन्वेस्ट किया to let it grow, be it real estate, stocks, crypto, or any other asset class. But remember, you don't have to follow their investment strategies. अपनी needs और risk appetite को समझो और अपना पैसा ऐसी जगह पर लगाओ जो आपको समझ में आती है. अपना मैक्सिमम पैसा उस एक एसेट क्लास में लगाओ और बाकी पैसा बाकी एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिससे अगर कभी कोई एक एसेट अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो आपके पास बाकी एसेट्स हैं. एंड रिमेंबर, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, प्लीज नेवर एवर follow the masses or give in to the market hype. Successful investors never let go of their cash without doing proper research. Don't worry, you don't have to be a finance guru for that. There are a number of resources out there for absolute beginners as well. बस इतना याद रखना,
कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना है. Just because something has been down for the past 1 year doesn't mean it's not profitable. Zoom out. Look at the trends of the past 10, 20 or even 30 years to get a clearer picture. Oh, and don't wait to have a lot of money before starting investing. Start with whatever money you have and improvise along the way. The third one is underestimating the black swan. A rich person would never ever underestimate the black swan. ये क्या है? जिन्हें नहीं पता, Black Swan refers to an unpredictable event that no one expects to happen. For example, the pandemic, the recession, health emergencies. ऐसे events हमें usually एक बहुत बड़े financial crunch के साथ छोड़ जाते हैं. हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर तो कर सकते हैं खुद को. और ये जो अमीर लोग होते हैं, ये हमेशा प्रिपेयर्ड होते हैं. तो अब सवाल उठता है कि हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर सच ब्लैक स्वॉन्स? तो उसके 3 तरीके हैं. पहला, हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. आई नो आपने ये चीज कई बार सुनी होगी, लेकिन हम में से मेजॉरिटी लोग इस पर एक्ट नहीं करते हैं. तो इफ यू हैव टाइम, यू कैन स्टार्ट समथिंग एज अ साइड हसल फॉर द टाइम बीइंग. और अगर टाइम नहीं है, देयर आर अ नंबर ऑफ पैसिव इनकम आइडियाज आउट देयर एज वेल. जस्ट डोंट रिलाई ऑन योर जॉब और योर बिजनेस टू पे योर बिल्स फॉरएवर. इनफैक्ट कई बार आपके इन्वेस्टमेंट्स भी पैसिव इनकम के एक सोर्स की तरह से एक्ट कर सकते हैं. दूसरा तरीका है टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. The only thing we can completely count on is ourselves. तो फिर खुद पे इन्वेस्ट करने का कैसे सोचे हो? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे. तो जल्दी सोचो और अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना लो कि you're never out of business. Learn multiple skills and become the best at what you do if you want to become irreplaceable and not be sitting jobless. If you want to keep earning, you'll have to keep upgrading. बुक्स खरीदो, कोर्सेस खरीदो, अपने आप को हेल्दी रखने में पैसे खर्च करो. ट्रस्ट मी, इट विल बी वर्थ एवरी पेनी. तीसरा तरीका है ऑलवेज हैव इमरजेंसी फंड्स. अब ये जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू डोंट वांट टू बी ब्रोक व्हेन यू आर सफरिंग फिजिकली और मेंटली, डू यू? So start saving, and when you do not touch those funds unless it's an actual emergency. And no, financing your trip or buying a new phone is not an emergency. Whew. Well, that was a lot. I hope you all got to learn a thing or two. Were you making any of these mistakes? Are you an impulsive shopper as well? Let me know in the comment section below. With that said, I'll take your leave. See you in the next one. Over and out.